Welcome to all. Today we will discuss under differentiation implicit function and explicit function. अब implicit function क्या होता है? Derivative of implicit function. So if I solve, दो टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं. One is implicit, another is explicit. So whenever we solve y as a function of x, suppose हमारे पास अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स अगर हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं तो इट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. जब कभी y एंड x टर्म्स वन साइड एंड y टर्म्स एक साइड हो जाते हैं तो देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. एंड इम्प्लिसिट में होता है कि व्हेनेवर x एंड y x वेरिएबल्स एंड y वेरिएबल्स को हम अलग अलग अगर नहीं कर सकते, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज implicit function. Let us show the examples. Suppose sin x y plus 3x is equal to y. ये हमारे पास एक फंक्शन है sin x y plus 3x is equal to y. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि y को इकट्ठे एंड x वेरिएबल को एक साथ नहीं लिख सकते हैं. So that's why it is called implicit function, because एक्स वाई यहाँ पे साइन एक्स वाई द एंगल्स ऑफ दिस साइन फंक्शंस एंड डी वाई हमारे पास है. तो वाई को अलग एंड एक्स को अलग हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इस चैप्टर में इन दिस आर्टिकल से वी विल सॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. तो दूसरा टाइप का हमारे पास जो फंक्शन होता है नोन एज इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन. तो एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन whenever y variables and x variables is separated, then such type of function known as explicit functions. For example, तो एग्जाम्पल हमारे पास है सपोज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे हमारे पास वी कैन सेपरेट वेरिएबल y एंड वेरिएबल x. तो 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 6. इस तरह से हमने क्या कर दिया, y को अलग कर दिया एंड x को अलग कर दिया. नाउ वी कैन डिफरेंशिएट y वेरी इजीली. बहुत आसानी से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. 1/4 एंड 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाता है. तो ये मेरे पास है. सो फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शंस हमें यहाँ पे या तो डायरेक्ट वे से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर देंगे. एंड अनदर डायरेक्ट वे मीन्स सपोज साइन एक्स वाई है, साइन एक्स वाई डिफरेंशिएट देयर आर 3 फंक्शन. यहाँ पर हमारे पास एक तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल्स है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 by 1 using the chain rule. We will use the chain rule. If I use the chain rule का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ साइन d upon, suppose we need derivative of this expressions with respect to x. So हम क्या करेंगे, let us do sin x y and plus differentiate of 3x and differentiate of y. तो हमको क्या निकालनी, we have to find out dy upon dx. Now first using the chain rule, first differentiate of sin का डिफरेंशिएशन हमारे पास cos हो गया, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट ऑफ x and y टर्म्स. एंड हियर x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू dy upon dx. नाउ नेक्स्ट वन इसको कंप्लीट कर लेते हैं. एंड यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, तो वी हैव यूज द प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू y. तो ये मेरे पास हो जाता है, यस दिस इज द फंक्शंस. इफ यू नीड
dy upon dx अगर हमको निकालनी है तो dy upon dx टर्म्स should be placed one side and the remaining terms another side. इस तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ y with respect of x निकाल सकते हैं. So this type of function we will discuss in this exercise, derivative of implicit function. Now NCERT exercise 5.3 पहला क्वेश्चन है find dy upon dx in the following. तो दिस इज द इक्वेशन हमारे पास. तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है. तो यहाँ पे y को अलग कर सकते हैं, y को वन साइड कर सकते हैं एंड x को अलग कर सकते हैं. तो बिकॉज 3y इज इक्वल टू साइन x माइनस ट्वाइस एक्स. तरह से हमने क्या कर दिया, y वेरिएबल्स एक साथ हो गया एंड x वेरिएबल्स इज वन साइड. तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो अनदर वन इज गोज इन डायरेक्टली डिफरेंशिएट ऑफ दिस वन. तो अगर इसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x एंड तो 2x का 2 हो जाता है. दिस इज हमने वेरिएबल्स अलग कर दिया, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड नाउ दिस इज द फॉर द डायरेक्ट मेथड. दिस इज द डायरेक्ट वन. डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, विदाउट सेपरेटिंग वेरिएबल्स x एंड y, तो वी गो डायरेक्टली डिफरेंशिएट. इसको सीधे डिफरेंशिएट कर लेते हैं. 2x का हमारे पास d अपॉन डी एक्स ट्वाइस एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स वी आर डिफरेंशिएटिंग with respect of x के रिस्पेक्टिव हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. 2x विल हैव 1 इंटू 2x का 1 हो गया एंड 3y का 3 इज आउटसाइड एंड dy अपॉन dx एंड तो sin x का हमारे पास cos x हो जाता है. तो इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया फ्रॉम ईयर. तो 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2. तो फ्रॉम हियर तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. सो इन दिस वे एंड फ्रॉम हियर तो dy upon dx, so both methods will get the same answer and divided by 3. तो this is direct method and इसमें हमने y variable one side and x variables one side किया. Now question number 2. In question number 2 we have, and the question is 2x plus 3y. 2x plus 3y is equal to very simple question, sin y. तो इसका हम सीधे डिफरेंशिएट करते हैं बाय द डायरेक्ट मेथड एंड 2x का हो गया मेरे पास 2 इंटू 1 एंड इसका डिफरेंशिएशन 3 आउटसाइड dy अपॉन dx एंड नाउ sin y हैज डिफरेंशिएशन d अपॉन dx. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग द चेन रूल. इसमें चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज sin y इज अ फंक्शन ऑफ y एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के. तो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे. दैट विल बी d अपॉन dy. तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर पे जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है वो नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएट नहीं होगा. आई हैव डिवाइडेड dy एंड मल्टीप्लाइड बाय dy. तो dy अपॉन dx dy अपॉन dx तो ये मेरे पास आ गया. नाउ फ्रॉम हियर तो साइन y का इजीली हमारे पास आंसर आ जाता है cos y इंटू dy अपॉन dx. सो नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था 2 प्लस 3 dy upon dx and on the right hand side we have cos y into dy upon dx. Now separate the dy terms in one side. dy terms को एक साथ ले लेते हैं. This term goes the right hand side. इसको हम right hand side भेजें तो now this becomes twice plus twice is equal to not plus twice is equal to this minus this. Now here
cos y into dy upon dx and minus 3 dy upon dx, minus 3 dy upon dx, इस तरह से. Now taken dy upon dx common from here, तो now यहाँ से हम dy upon dx common निकाल सकते हैं. We will if I taken common, so now 2 is equal to cos y minus 3 into dy upon dx, dy upon dx. So now the answer is, final answer is dy upon dx, dy upon dx is equal to 2 divided by cos y minus 3. This is our answer. तो इस तरह से we have get the derivative of the explicit function. ये हमारे पास explicit function है. In this question, find the derivative of y with respect to x. So this is required to find. तो ये हमको निकालनी है. So obviously this is a explicit function. X variable one side and y variable भी एक साथ कर सकते हैं. Now we go directly differentiate this one. Differentiate of ax. x का 1 हो जाता है, तो only simply हम क्या करेंगे, into 1. And now differentiate of this one. Differentiate of y square with respect of x and right hand side, and differentiate, we are differentiating with respect to x. तो x के रिस्पेक्टिव हम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएट तभी होगा द वेरिएबल y when ours we differentiate with respect to y. तो लेफ्ट में हो गया मेरे पास a, तो हमको क्या करना पड़ेगा, d upon dy y square into dy upon dx using the chain rule, and here is also d upon dy cos y into dy upon dx हमारा आ जाता है. Now finally we get a plus 2y का हो गया twice by and into dy upon dx, and here cos y का differentiation minus sin y from the standard formula of cos y into dy upon dx. So now here dy upon dx taken one side, so here a plus 2by dy upon dx, this term come in left hand side, sin y into dy upon dx is equal to 0. So यहाँ से dy upon dx taken out, so a plus dy upon dx taken outside, inside will be 2by plus sin y is equal to 0. Now therefore dy upon dx, and this a goes left and right hand side to minus a, and उसके नीचे ये वाला टर्म वहाँ पर चला जाएगा, twice by plus sin y. So this is our answer of the question number 3. Next question, question number 4. In question number 4 we have xy, this is the implicit function, xy plus y square 10x plus y. तो ये हमारे पास है ये implicit function है. यहाँ पे y variables and x variable को अलग अलग नहीं कर सकते. We can't separate x and y variables, so that's why it is implicit functions.
we can go directly differentiate of this one. Now using differentiation of this one, first term differentiate of this, d upon dx, we are going to differentiate with respect of x, d upon dx y square is equal to differentiation of 10x. तो इसका तो हो जाएगा बिकॉज द वेरिएबल इज ऑल्सो x एंड dy अपॉन dx. तो ये हमारे पास है. नाउ हियर तो एक्स वाई इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स. तो डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज dy अपॉन dx. किसी को भी फर्स्ट एंड सेकंड मान सकते हैं. नाउ सेकंड फंक्शन वाई डिफरेंशिएट ऑफ x, x का हो गया 1 एंड नेक्स्ट वन. तो इसको जब तक हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे y के रिस्पेक्टिव y स्क्वायर का नहीं होगा. दैट्स वाई यूजिंग द चेन रूल dy upon dx. Now 10x has the differentiation sec square x and plus dy upon dx. So now the term getting here so one step to go, x dy upon dx plus is y and y स्क्वायर का हो जाता है 2y into dy upon dx is equal to sec square x plus dy upon dx. अब नाउ हमारा काम है कि टू सेपरेट dy upon dx वन साइड. तो ये dy upon dx कम इन द थ्री टर्म्स, पहला दूसरा तीसरा, इनको एक साथ लिख लेते हैं. नाउ देन इट बिकम्स नाउ x dy upon dx, second term 2y plus 2y dy upon dx taken one side, and last one is this one minus dy upon dx. Other term shifts to right hand side. In right hand side we have sec square x minus 1. So in the right hand side it will become sec square x minus y. So यहाँ से dy taken dy upon dx common, dy upon dx is common. Now x plus 2y minus 1, x plus 2y minus 1, and the right hand side it will be sec square x minus y. So now from here dy upon dx finally हमारे पास आता है, and this goes in the denominator of this. Now finally sec square x minus y divided by x plus 2y minus 1. This is the answer of this part. In this question, this is obviously implicit function. We can not separate variables y from variable x. So हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड से हम जाएंगे टू सॉल्व इट. फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ दिस पार्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d upon dx x स्क्वायर एंड प्लस d upon dx एक्स वाई प्लस d upon dx y स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है. 2x है द डिफरेंशिएशन ट्वाइस x. ना यहाँ पे हम यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, तो एक को फर्स्ट फंक्शन पहला किसी को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं. दिस इज अवर सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएट ऑफ
first function, that is x, into second function. Now here we are differentiating with respect to x, but वेरिएबल हमारे पास y है तो नहीं होगा जब तक इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट पर नहीं करेंगे. इट विल नॉट पॉसिबल नाउ. तो बाय यूजिंग द चेन रूल एंड 100 का हो गया, ये कांस्टेंट टर्म विल बी 0. नाउ नेक्स्ट ट्वाइस x प्लस dy upon dx, x times dy upon dx, and dx upon dx is only 1, dx upon dt will be 1, and plus, so this will be 2y and dy upon dx. तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंशिएशन. नाउ एंड इकट्ठा कर लेते हैं these two term and taken dy upon dx out. Now 2x plus y here, 2x plus y प्लस dy upon dx कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो it will be dy upon dx x plus 2y, x plus 2y will be inside is equal to 0. So from here dy upon dx times x plus 2y, and this term goes in right hand side, which is a minus twice x minus y. Now finally this is the answer, dy upon dx is equal to minus twice x minus y divided by x plus 2y. So this is the final answer. This is the derivative of this implicit function. Now अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है question number 6. Now in this question this is x cube plus x square y plus x y की पावर x y की पावर y स्क्वायर प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू 81. तो ये हमारे पास है. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं पहला पार्ट का. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज वी नीड dy upon dx. सो यूजिंग इस टर्म से के लिए यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, d upon dx x y स्क्वायर प्लस, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट में रख दिया सारा, d upon dx 81. सो नाउ 81 का डिफरेंशिएशन वी विल हैव, 81 का डिफरेंशिएशन विल बी 0. नाउ x क्यूब का डिफरेंशिएशन विल बी 3x स्क्वायर, एंड यूजिंग यह प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज करेंगे. वी विल यूज यह प्रोडक्ट रूल. किसी को भी एनी टर्म्स एनी फैक्टर्स कैन बी फर्स्ट फंक्शन एंड अनदर वन बी सेकंड फंक्शन. सो नाउ इसका आंसर होता है यूजिंग द प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन इज अवर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ y, एंड प्लस पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड इनटू सेकंड फंक्शन. नाउ यह सेम वे इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे. वन फंक्शन विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. एनी फंक्शन कैन बी फर्स्ट और सेकंड. नाउ यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस differentiation of first function d upon dx into second function, and the last one y cube का differentiation only possible when we do with respect of y cube into, using the chain rule, dy upon dx, the value come out 0. So now
करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स 3 स्क्वायर प्लस एंड इसका तो हो चुका है dy अपॉन dx. सो हियर x क्यूब का इट विल बी 3x square into y, and here so it is possible only using the chain rule d upon dy and y square. तो हमने चेन रूल का इस्तेमाल किया प्लस एंड dx अपॉन dx इट्स 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. नाउ फाइनली हमारे पास आता है 3x square x square dy अपॉन dx सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म मेरे पास है 3x square y प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारे पास 2y इंटू dy अपॉन dx एंड प्लस y स्क्वायर प्लस 3y square dy upon dx is equal to 0. So this is the expression in the last one taken dy upon dx. जहाँ जहाँ हमारे पास dy upon dx है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इसमें से dy upon dx is taken out. Okay, go to the right hand side. So now without dy upon dx, this term 3x square plus 3x square into y, 3x square y plus y square plus, and that are those terms in which dy upon dx, उसको dy upon dx कॉमन निकाल लेते हैं. dy taken dy upon dx is common. Inside will be x square plus 2xy, x square plus 2xy plus 3y square plus 3y square is equal to 0. तो ये हमारे पास हो जाता है. नाउ फाइनली dy दिस टर्म इज इक्वल टू, तो dy अपॉन dx टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, एंड ये टर्म राइट हैंड साइड भेज देते हैं. टेकन राइट हैंड साइड 3x स्क्वायर प्लस 3x square y plus y square. Now finally we have dy upon dx is equal to, minus is taken out, 3x square plus 3x square y plus y square divided by, and this bracketed term x square 2xy plus 3y square. So now this is our final answer. Now in this question, this is also implicit function. So we have to find out dy upon dx. We need to calculate find dy upon dx. So now differentiate this d upon dx
एंड डी साइन वाई का होल स्क्वायर है ये, एंड अगेन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई, एंड के का होगा हमारे पास 0। तो नाउ साइन वाई का होल स्क्वायर का हो जाता है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो हमको यूजिंग द चेन रूल फर्स्ट तो वेरिएबल कन्वर्ट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई एंड dy upon dx using the chain rule. So now तो here using the chain rule first differentiate of cos का differentiation हमारे पास we have minus sin xy, the composite function है, this is the composite function. First differentiate of cos, that is minus sin xy, and differentiate of in the bracket which is xy is equal to 0, ये हमारे पास है. So now sin y का with respect to 2 times of sin y using, this is also a composite function. पहले x का स्क्वायर sin y का होल स्क्वायर का हो गया दिस वन. नाउ इनसाइड sin y का डिफरेंशिएशन इज d अपॉन dy sin y into dy upon dx is outside, plus into minus is minus sin xy and yx will be the same thing, and here using the product rule, first function differentiate of second function, differentiate of first function into second function is equal to 0. तो यहाँ पे भी taken anyone as a first function, 2 sin y into, तो sin y का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos y into dy upon dx and minus this is sin xy, and inside of the bracket x times dy upon dx, and here dx का differentiation is 1 and only y, outside is 0. So now finally इसको ओपन कर देते हैं, then 2 sin y times cos y into dy upon dx माइनस x आगे ले लेते हैं, sin xy times dy upon dx, and this is minus times xy is equal to 0. So now finally bring dy upon dx outside and other terms without dy upon dx in another side. So now dy upon dx is taken out, dy upon dx, so inside becomes 2 sin y into cos y, तो ये remaining here minus x times sin xy, bracket is closed, and this xy goes on right hand side. Now finally dy upon dx will become dy upon dx is equal to xy divided by 2 sin y times cos y minus x times sin xy. तो यहाँ पे sin xy the angle of sin function, तो ये हमारे पास हो जाता है. देयर इज एनी टर्म्स इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर, नो, कोई भी टर्म कॉमन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया.